हे गाइज एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारे डोर पिलर है वो कितने बोरिंग है, मतलब मैट ब्लैक में है फिर भी ठीक है, बट थोड़ा एस्थेटिक फीलिंग लाने के लिए आज हम इस पे करने वाले हैं अपना कार्बन फाइबर विनाइल रैप। तो एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर जो लगेगा। बिफोर तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन मैट ब्लैक में है, और गाइज इस पर डस्ट बहुत स्टिक होती है तो वो गंदा लगता है। एंड गाइज आफ्टर इफेक्ट आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले जहाँ पे भी हमें रैपिंग करनी है उस एरिया को अच्छे से हम लोग ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर लेंगे। गाइस मेक श्योर कि वहाँ पे कोई भी डस्ट पार्टिकल ना रहे, क्योंकि अगर कोई डस्ट पार्टिकल रहा तो उसकी वजह से गाइस एयर बबल आएंगे एंड विनाइल अच्छे से स्टिक नहीं होगा। सो गाइज मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, हम लोग जो हमारा विनाइल रैप है उसको लेंगे और थोड़ा सा जितना जहाँ पे स्टिक करना है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग उसको कट कर लेंगे। गाइज मेक श्योर कि जो आपका कटर हो वो शार्प हो और विनाइल को वो डैमेज ना करे। एंड पेंट के ऊपर रख के मत कट करना, वरना अगर ज़्यादा शार्प हुआ तो पेंट भी डैमेज हो जाएगा। सो गाइज अब हम लोग विनाइल के जो पीछे बैक में पेपर होता है उसको पील ऑफ करके और उसको स्टिक करेंगे। गाइज आप लोग क्रेडिट कार्ड या और किसी एटीएम कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जब हम उसको अप्लाई करें तो एयर बबल्स ना आए। वैसे तो बाद में हम लोग हेयर ड्रायर से एयर बबल्स को निकाल देंगे, बट स्टार्टिंग में जितने कम एयर बबल्स आए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो गाइज इस स्टेप में अपना पूरा ध्यान दें और इजीली वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी थोड़े कॉन्शियस होकर इस स्टेप को करें। सो गाइज आगे हम लोग जितने भी हमारे ग्रूव्स है साइड में या फिर जितनी भी थोड़ी सी स्पेसिंग हमें दिख रही है उसके अंदर अच्छे से हम लोग विनाइल को सेट कर देंगे। एंड बाद में गाइज इसको यहीं से ही हम अपना जो कटर है उससे कट करेंगे। तो जितना ज़्यादा आप ग्रूव्स के अंदर विनाइल को डाल दोगे उतना ज़्यादा आपको कटिंग में ईजी हो जाएगा, और आपका जो साइड में रबर पार्ट है या फिर अगर पेंट है साइड में तो वो डैमेज कम से कम होगा या फिर नहीं भी होगा।
सो गाइज यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं एक हेयर ड्रायर, क्योंकि मेरे पास कोई हीट गन नहीं है एंड आई एम श्योर कि आपके पास भी नहीं होगी, अगर हो तो अच्छा है। वैसे हेयर ड्रायर से भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जितने भी एयर बबल्स बचे हैं या फिर अगर नहीं भी आए तो भी एक बार हम हेयर ड्रायर करके और उसके ऊपर जो हमारा कार्ड है उसको स्वाइप कर देंगे, ताकि अच्छे से वो विनाइल स्टिक हो जाए एंड इसकी लाइफ है जो वो इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा जल्दी वो उखड़े ना। सो गाइस आप लोग यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हैं। फ्रंट वाला जो पिलर था वो मैंने रैप कर दिया है एंड पीछे वाला नहीं करा है। तो गाइस देख सकते हैं रैपिंग से ही कितना ज़्यादा जो हमारा लुक है वो चेंज हो जाता है, और ऊपर जो विंड वाइजर है उसके साथ मैच हो रहे हैं बहुत अच्छे से। यूँ नहीं लग रहा कि एक्सटर्नल रैपिंग कराई हुई है, ऐसा ही लग रहा है कि ये पार्ट ही हो इसका।